Friends, welcome to my channel. I'm Dr. T.C. Paul. Today we are going to talk with relevant to Proverb. Today is 13th July 2000, June 2025. Well, when talk about Proverb, that is a saying of truth, which is true and factual, which is relevant for moral life of human being, is called a proverb. The topic of the day that we have decided to talk is a little knowledge is a dangerous thing. When I talk about a little knowledge is a dangerous thing, that we have to understand at what category and which level we do talk this proverb. I have given around 7 points to learn. The basic points are point number 1, point number 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7. First point is partial or incomplete knowledge. When you talk about partial knowledge, that the person doesn't have the depth of knowledge, right? Or incomplete knowledge, when at the time of expression he doesn't give the complete sense of the knowledge from A to Z level of understanding of the subject that he is expressing. So that is called partial or incomplete knowledge that he does want to convey to the listeners. But the second point, it is harmful than no knowledge at all. Yes, we do think that if there is no knowledge, he will be dumb, he will not speak out. But if he has got the limited knowledge, it will be more harmful, in some cases lead to like a cancer, right? So you have to think about the person who is full of knowledge, that person will not talk much, rather he will listen to someone much. He will reserve the knowledge in his brain. The person who doesn't have much knowledge or depth of knowledge, he will talk incessantly, occasionally, not occasionally, right? Season and out of season. Well, the third one is overconfidence. Overconfidence is not good. Confidence is important for moral life, for speaking with someone, conversing with someone, giving the knowledge, sharing the knowledge, getting the facts about the subject matter or relating to our life. But when someone shows the overconfidence, that shows know little about a topic which may lead to arrogance and reluctance. The person who knows less or little, he shows arrogance and reluctance. Arrogance means he will be overburdened for someone, right? Or reluctance, he is not to listen to other. While arrogance is a part that the person who is little knowledgeable one, it manifests or shows a lack of humility. Humility means where you are not showing the praise to someone, where you are not showing your loving sense of someone or respecting sense of someone. Well, difficult to acknowledge the limitations of one's knowledge. Someone who is a little knowledgeable one, he has got that limitations of knowledge. He doesn't have much knowledge, depth knowledge. He will have superfluous types of knowledge. Well, a shallow conclusion. Shallow defines a very less or shortcut way he wants to talk, but talks like a bombshell. A limited knowledgeable person becomes hasty. Hasty means hurriedly or inaccurate conclusions being given by him about the subject he is expressing. Well, the dangerous actions when a person who is less knowledgeable, it may partially dangerous, or such as in the medical fields where it will lead to death. We find that when we talk a doctor, the doctor will, the person who is a new doctor, he will not think much, rather he will do hurriedly some way, and the patient becomes ill, much ill, and the patient leads to
death. So it is because of that we know, be aware from a new doctor and old barber. That is because of only showing the smartness and showing other that you are a doctor, but depth of the knowledge in terms of accuracy of treating patient is not with you. That means it will lead to problematic. आइए दोस्तों, let us learn in Hindi of this proverb. A little knowledge is a dangerous thing. थोड़ा सा knowledge जो वो खतरनाक होता है. First point is given partial or incomplete knowledge. जिनका knowledge जो है थोड़ा सा होता है और ज़्यादा नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है. सेकंड पॉइंट, इट इज़ हार्मफुल देन नो नॉलेज एट ऑल. जिस आदमी के पास नॉलेज नहीं है वो तो ठीक है, बट जिसका पास थोड़ा कमती नॉलेज है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, यानी कि ज़्यादा बम्बास्टिक में बात करता है, राइट, बोमशेल जैसा. ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है. तो इसका जो बात करते हैं, नो लिटिल अबाउट अ टॉपिक विच में लीड टू एरोगेंस रिलक्टेंस. जानता है बहुत ही कम किसी टॉपिक के बारे में और उसका अंदर में उसका अहमिका और ना सुनने का क्षमता ज़्यादा होता है. एरोगेंस उसका अंदर में भरा पड़ा हुआ है, जिसमें वो दिखाता है, मैनिफेस्ट करना मतलब दिखाना. लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, किसी को विनम्रता दिखाना, यानी वो किसी को सामने अच्छे तरीके से व्यवहार करना. डिफ़िकल्ट टू एक्नॉलेज द लिमिटेशंस ऑफ वांस नॉलेज. उस आदमी जो है ना अपना जो नॉलेज का जो लिमिटेशंस के बारे में एक्नॉलेज नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है. उनका शैलो कंक्लूशंस का मतलब होता है शॉर्टकट हुआ में जितना बोलना है बोलना चाहता है. अगर दूसरा आदमी सुनना नहीं चाहता है, जो इसमें इनएक्यूरेसी ज़्यादा होता है और कंक्लूशंस भी सही नहीं होता है जिस सब्जेक्ट में बात करना चाहता है. डेंजरियस एक्शंस डिफाइन करता है जो लिटिल नॉलेज इज़ पार्शियली डेंजरियस. जिसका अंदर में थोड़ा सा नॉलेज रहता है वो खतरनाक इसलिए होता है. हम देखते हैं मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर जो नया नया आता है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है और वो हमेशा बोलता ज़्यादा है, बट उनका अंदर में जो पेशेंट को ट्रीट करने का क्षमता कमती होता है और पेशेंट का डेथ भी हो जाती है. आइए दोस्तों, लेट अस लर्न इंग्लिश टू बेंगोली. আজকের যে প্রভাব যে হলো সেটা হলো আ লিটিল নলেজ ইজ এ ডেঞ্জারিয়াস থিং. স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর. এখানে 7টা পয়েন্ট দেওয়া হলো. পার্শিয়ালি অর ইনকমপ্লিট নলেজ, যার ভিতরে পার্শিয়াল মানে স্বল্প নলেজ, পুরো নলেজ নেই, আর ইনকমপ্লিট অসম্পূর্ণ নলেজ দিয়ে ভরা. দ্বিতীয়টা হলো ইট ইজ হার্মফুল দেন নো নলেজ এট অল. যার নলেজ নেই সেটা হচ্ছে তো নেই, আর যার ওনার ভিতরে অল্প নলেজ কিন্তু বেশি বলে. ওভার কনফিডেন্স থাকা ভালো, কনফিডেন্স থাকলে আপনি বলতে পারবেন, কিন্তু ওভার কনফিডেন্স থাকলে কি হয়, আপনার ভিতরে নলেজ কম, বলেন বেশি, যাতে আপনার মধ্যে অহমিকা এবং না শোনার ক্ষমতাটা বেশি হয়ে থাকে. অ্যারোগেন্স, অহমিকা যার ভিতরে আছে তার দেখায় যেন উনি অন্যের সাথে বিনম্র স্বভাবটা দেখায় না. ডিফিকাল্ট টু অ্যাকনোলেজ দ্য লিমিটেশনস অফ ওয়ান্স নলেজ, উনি ডিফিকাল্ট দেখা যায় ডিফিকাল্ট টু অ্যাকনোলেজ দ্য লিমিটেশনস অফ ওয়ান্স নলেজ. একজনের যে জ্ঞানের সমতাগুলো মানে লিমিটেশনগুলো উনি স্বীকার করতে চায় না, খুবই প্রবলেমেটিক থাকেন. শ্যালো কনক্লুশনস, ওনার ভিতরে যে শেষ করার ক্ষমতাটা, যা কিছু বলবেন ওনার ভিতরে লাস্টের যে আনসারটা সেটা শর্টকাট হয়ে থাকে, ছোট হয়ে থাকে, কারণ ওনার ভিতরে ইনএকুরেসি নেই, মানে ঠিক করে বলার ক্ষমতা নেই যে সাবজেক্টে উনি কথা বলছেন. ডেঞ্জারাস অ্যাকশনস আমরা দেখে থাকি, যার ভিতরে স্বল্প বুদ্ধি এবং সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে. মেডিকেল ফিল্ডেও এটা দেখা যায়. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রেন্ডস.